Hello everyone. In previous lecture we talked about concept of tenses. Now we'll cover structure of sentence. Every action required a proper sentence structure in order to describe it. For example, a person is running, he is riding bicycle, he's playing, he's doing skating, he's crawling, he's playing badminton, he is sitting on the bench. All are example of sentence. So a proper sentence has three elements: subject, verb, and object. Subject is the person who is actually involved in a particular action. So whatever action he is performing, that is a verb, and on which object he is performing his action, that is object. So in this example, Ali is running on the road, so Ali would be subject, running is verb, and road is object. जो person specific काम कर रहा था उसको subject, वो subject होगा जो actually उसकी driving, जो कि एक driving element होगा एक sentence में, that would be subject. लाजमी नहीं वो person ही हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो दैट इज़ अ सब्जेक्ट. जो भी एक्शन होगा, चाहे वो रनिंग हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, वो वर्ब होगा. और जिस ऑब्जेक्ट पे वो अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा. इस एग्जांपल में अली इज़ रनिंग ऑन द रोड, सो अली सब्जेक्ट है, रनिंग इज़ वर्ब एंड रोड इज़ ऑब्जेक्ट. सो हम मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं. आपको मज़ीद इस कंसेप्ट को एलैबोरेट करने के लिए. सो अली इज़ परफॉर्मिंग अ डिफरेंट एक्शन नाउ. व्हाट ही इज़ डूइंग नाउ, ही इज़ राइडिंग बाइसिकल. सो अब वर्ब क्या हो गया, अब डिफरेंट एक्शन है, राइडिंग बाइसिकल. सो राइडिंग बाइसिकल ऑन द रोड. सो अब अली सब्जेक्ट है, राइडिंग बाइसिकल वर्ब, and object road. So Ali is riding bicycle on the road. एक और एग्जांपल देखते हैं. Ali is riding on bicycle. अब क्या है एक्शन उसका, बाइसिकल पे है. पहले हमारा फोकस रोड था, अभी बाइसिकल है. सो a same structure, a same sentence can be described in different ways. So now in this example, Ali is riding on the bicycle. So इस example में bicycle is object, riding is verb, and subject is Ali. एक और example देखते हैं. अब अली का action क्या है कि वो बैठा हुआ है bench पे, तो Ali is sitting on the bench. So अब action क्या है, sit. Sitting is the action, is the verb. So Ali is sitting on the bench. So that's all about this lecture. I hope this concept is clear. Now we'll proceed with different forms of verb. Thank you.